So good morning everyone, welcome to Raj Malhotra IAS. So guys, we are about to start the session. You have to just give me 1 minute. Okay, so let me install my system and we will be starting this session. Pooja, Sandeep, Pranjal, Mohit, Varsha, Abdul, Suman, Pranav, good morning all. Okay, so we are about to start our session. You have to give me just 1 minute. 1 मिनट आपको मुझे देना पड़ेगा, तो उसके बाद हम जो है आज का सेशन शुरू करेंगे. So I'll upload the PDF for today's session. So PDF for today's session has been uploaded. You can download the PDF from our Telegram group. आप Telegram group से जाके PDF download कर सकते हो. Okay. So Rahul, good morning. So let me install my system here. And then we'll start the session. So it's raining here right now. So if there is any disruption in the session, okay, so you have to give me few minutes. अगर कोई डिसरप्शन होता है तो आपको मुझे थोड़ा टाइम देना पड़ेगा. थोड़ा टाइम इसलिए ताकि मैं नेटवर्क दोबारा इंस्टॉल कर सकूं. ओके, मोबाइल इंटरनेट से चलाना पड़ेगा इफ देयर इज एनी डिसरप्शन. बट वी शुड होप फॉर द बेस्ट दैट वी शुड हैव अ स्मूथ सेशन हियर, कि हर एवरीथिंग शुड गो स्मूथ हियर. ओके, सो लेट्स सी व्हाट एल्स इज देयर फॉर अस. देखते हैं आज क्या है हमारे लिए. ओके, so here we are now. Opposition leaders call for unity to take on BJP. Okay, it's a good thing that they are uniting, but the point is that on what basis? Okay, on what basis they are uniting? It is like, is it just political opportunism? क्या सिर्फ political opportunism है ये? Is it just political opportunism? Okay, yeah, they genuinely think that in your democratic setup the opposition should have some strength. Okay, so it's important in our democracy. Opposition is really important. Why it is so? Because they are the one who are going to criticize the government. जो गवर्नमेंट की पॉलिसी का क्रिटिसिज्म होगा वो ओपोजिशन करेगा, टू रेज द वॉइस ऑफ कॉमन मैन. ओके, टू रेज द वॉइस ऑफ कॉमन मैन. So this is the point here. Now one more important part here. Now suppose if there is a question in your GS paper 2 regarding the working of parliament, okay, that your parliament is not performing, your parliament is not performing, your parliament is underperforming. One of the reason for that is you have weak opposition. आपके यहाँ पे weak opposition है, ये भी एक reason है. Okay, why it become a reason? See, when you have a weak opposition, means adequate time will not be given to opposition members. जो member of parliament होंगे opposition के, उनको ज़्यादा time नहीं मिलेगा collectively. Okay, every member of parliament, like they have a particular time, उतना बोलने का मौका मिलता है. Now when adequate time will not be given, so what they will do, they will start moving to well of the house. House के well में आएंगे, शोर मचाएंगे. So this is how it is going to degrade the, you can say, quality of debate. Okay, ये एक problem यहाँ पे नजर आती है. Other thing is that if you talk about the role of parliament, that is to check the government, to check the executive. Okay, कि executive के ऊपर एक check रखना, वो भी यहाँ पे impact होता है. ठीक है ना, बिकॉज ओपोजिशन में वॉइसेस ही नहीं होती, नो वन इज गोइंग टू रेज एनीथिंग. दैट्स अ प्रॉब्लम हियर, दैट्स अ major problem here. Other than that, we'll move to next part now. Now reign of terror is never permanent. This is what Prime Minister is saying.
Okay, and he's giving an example of Somnath temple, the best example and assurance. Okay, so presently the world is looking up to Taliban कि Taliban क्या करेगा. So Indian Prime Minister का statement एक important है, because it is going to, like, it is showing that in which direction we might move. Okay, it is showing that terror is not acceptable to us. Now when terror is not acceptable to us, certainly you will try to keep distance from organizations like Taliban. आप उनसे थोड़ा distance बना के रखेंगे. Okay, so it is showing some direction. कुछ direction नजर आ रही है. At the end of the day, the realism जो government choose करेगी, ठीक है ना? Realism will be decided by the government. Okay, now when you go realist, जब आप realist होते हो, so definitely you have to, uh, like, look up to the ground reality, and Taliban is a ground reality over there. Okay, so if your realism will prevail, then definitely you will have to engage with Taliban. आपको तालिबान के साथ एंगेज करना पड़ेगा. दिस इज द आइडियलिस्टिक सिचुएशन, आइडियलिस्टिक सिनेरियो विच प्राइम मिनिस्टर इज सेइंग कि टेरर अच्छी चीज़ नहीं है, बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, लेकिन रियलिज्म के हिसाब से चलना है आपको. ओके, सो वी हैव टू स्टिल वेट एंड वॉच व्हाट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल ट्राई टू डू हियर. ओके, बट ये एक डायरेक्शन दिखा रही है, एंड वी नेवर नो कि क्या इसका फ्यूचर होने वाला है. ठीक है ना? सो विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, आगे चलते हैं. ओके, सो लेट्स सी व्हाट एल्स इज देयर. नाउ दिस Zycov D first vaccine for those above 12 gets node. Okay, so this is what we have to cover here. Now 66% इसकी efficacy है, which is decent. Okay, more number of options आपके पास available होंगे, and this is, it has been granted the emergency approval. Okay, and like direct drug controller general, they have allowed this particular vaccine. This vaccine was developed by Ahmedabad based Zydus Cadila group. Okay, and it's a good thing कि आप 12 और above को जो है ये वैक्सीन दे सकते हो. So it is a DNA based vaccine in the world and can be administered without needle. Okay, और रिएक्शन के चांसेस भी इसके अंदर कम हैं. ठीक है ना? सो दिस इज द पॉइंट दैट वी हैव हियर. ओके, दिस इज द पॉइंट दैट वी हैव हियर. नाउ आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है इस वैक्सीन के बारे में. ठीक है ना? like who is the creator and all, if you are preparing for non UPSC exams. Okay, अगर आप non UPSC exams के लिए prepare कर रहे हो, then you should have some idea about it. थोड़ा सा idea इसके बारे में होना चाहिए. ठीक है ना? Other than that, like, you have to see things from Indian policy perspective. Now when you bring in the Indian policy perspective, definitely we are looking for diverse sources. Okay, जितना ज़्यादा diverse source से आपको vaccine available है उतना अच्छा होगा. And if the diverse source is available domestically, अगर ये डोमेस्टिकली अवेलेबल है, देन देयर कांट बी एनीथिंग बेटर देन दैट. उससे अच्छी चीज़ कोई नहीं हो सकती है. ठीक है ना? सो दिस इज द गुड थिंग दैट इंडियन फार्मा इंडस्ट्री इज काटरिंग टू आवर डिमांड. हमारी डिमांड को पूरा करने में वो अपने लेवल पे लगे हुए हैं. ठीक है ना? सो अदर देन दैट देयर इज नथिंग मच. विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट नाउ. आगे चलते हैं. डायरेक्टली विल मूव टू द एडिटोरियल पोर्शन, एंड इन टूडेज एडिटोरियल सेक्शन, ओके, वी आर गोइंग टू कवर ओनली वन एडिटोरियल. एक एडिटोरियल जो है हम लोग कवर करने वाले हैं. ठीक है ना? सो there is a reason for that, because यही जो है आपके एग्जाम के लिए important है. So presently if you see this particular editorial in battleground UP, okay, this is a political editorial, so we are not going to cover this. Okay, so आप इसको छोड़ सकते हो. Politics जो है वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना important नहीं है. So we are going to cover this part only, the fall of Kabul, the future of regional geopolitics. Okay, now this is the important aspect here. Why it is important? See, in the present time, okay, in the present time, whatever crisis is going on in Afghanistan, आपके वहाँ पे जो भी crisis चल रहा है, ठीक है ना, आपको उसे देखना पड़ेगा. देखना in the sense, आप उस crisis को observe करें. One thing that you will find is regional players are somehow missing at present. Apart from Pakistan, okay, no one else is having a command. किसी के पास कमांड नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान ही है जो वहां पे डोमिनेट कर रहा है. नाउ इट विल डेफिनेटली हैव सम रिपरकशन इन द सेंस देयर शुड हैव बीन सम अदर पावर. कोई और अदर पावर होनी चाहिए थी यहाँ पे पाकिस्तान को बैलेंस करने के लिए. ओके, बट दैट इज मिसिंग नाउ. वो चीज़ यहाँ पे कंप्लीटली हमें मिसिंग हो रही है. ठीक है ना? सो वी आर गोइंग टू सी दिस एडिटोरियल व्हाट दे आर पॉइंटिंग आउट, एंड द होल एडिटोरियल इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज एक्सप्लेनिंग द प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ अफगानिस्तान, कि यहाँ पे चल क्या रहा है आज की डेट में.
Okay, and later in today's session we are going to cover one interview also which is mentioning about यूएस की फॉल्ट लाइंस क्या आती, यूएस कहाँ कहाँ पे जो है पीछे रह गया. So definitely see, there is a vacuum when Americans are moving out, it is going to create a vacuum. Okay, so whenever there is a vacuum, other powers will definitely come and wants to occupy it. Now when it comes to other power, you have China, you have Russia. Okay, so presently they are very effective. Then Turkey might also try to like gain some ground here. Pakistan is already working here. Okay, Pakistan already काम कर रहा है यहाँ पे. So this is the problem that we have. और हमारे यहाँ पे जो स्ट्रेटेजिक चॉइसेस की बात करते हैं उसकी लिमिटेशंस नजर आ रही हैं. वाई वी हैव अ लिमिटेड स्ट्रेटेजिक चॉइस? बिकॉज वी डिडंट एंगेज विद तालिबान. ओके, वी डिडंट एंगेज विद तालिबान. एंड डेफिनेटली व्हेन यू आर नॉट एंगेजिंग विद तालिबान, दे विल नॉट लिसन टू यू. आपकी वो क्यों सुनेंगे? सो ये पॉइंट समझना यहाँ पे बहुत जरूरी है. ठीक है ना? सो a lot depend on the Taliban's actual conduct, like both domestically as well as on the southern and the western Asian geopolitical chessboard. Now Taliban, it can be used as a villain also, they can improve also. Okay, so the way they are going to react, it is going to define कि यहाँ पे बाकी players की क्या यहाँ पे policy रहने वाली है. ठीक है ना? When it comes to geopolitical policy, foreign policy, a lot depends upon Taliban now, the way they are going to conduct. If they want good relations with India, डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट पड़ेगा यहाँ पे. ठीक है ना? सो फॉर दिल्ली एज ऑफ नाउ द फॉल ऑफ काबुल इज अ मोमेंट ऑफ रेकनिंग एंड इट मस्ट रीथिंक इट्स रीजनल स्ट्रेटजीज. ओके, सो प्रेजेंटली वी हैव नो लिंक विद तालिबान. बैक चैनल पे कुछ होगा तो पता नहीं, बट गवर्नमेंट लेवल पे जो लिंकेज है वो नजर नहीं आ रहा है. ठीक है? सो रीजनल डायनेमिक्स में यू हैव टू रिकैलकुलेट योर पॉलिसी. कुछ ना कुछ गड़बड़ रही है हमारे यहाँ पे. आप अपने आप को वर्ल्ड पावर बनाना चाहते हो, बट इफ यू आर नॉट एग्जिस्टिंग रीजनली, अगर आप रीजनली एग्जिस्ट नहीं करते हो, हाउ कैन यू क्लेम टू बी अ वर्ल्ड पावर? ओके, सो दैट्स द पॉइंट हियर. सो हियर इट इज सेइंग दैट यू हैव टू रीस्ट्रेटेजाइज. आपको रीस्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा सारा पॉइंट. ठीक है ना? सो अ वैक्यूम, लाइक व्हाट इज मोस्ट डिसकंसर्टिंग इज द रीजनल पावर वैक्यूम इन दिस एरिया. ओके, रीजनल पावर कहीं पे नजर नहीं आ रही है. And definitely these particular powers, be it Russia, be it China, they don't want US to be effective there. Basically they are having anti-US feeling. Okay, so our axis of regional powers such as China, Pakistan, Russia and Taliban, they are already starting, they are filling the vacuum. Okay, so US के जाने से जो vacuum हुआ है, तो ये लोग जो हैं vacuum fill कर रहे हैं वो. Now if you see this group, China, Pakistan, Russia and Taliban, okay, so Iran might also jump this bandwagon. ईरान भी इनके साथ आ सकता है. ठीक है ना? So if you look at them, they are basically anti-American. Okay, all these have some anti-American feeling and definitely it is going to further increase this feeling. Okay, ये feeling increase हो जाएगी and they never wanted US to be present in the region. वो भगाना चाहते थे यहाँ पे. ठीक है ना? But it is going to have direct consequence for us. Why it is so? We cannot have anti-US feeling. हम anti-US action नहीं ले सकते हैं. US is having a good relation with India. That's the point here. Okay, so ये आपको समझना है. Other than that, even the United States have to rethink on different issues. Now this axis is emerging based on the anti-US sentiments. Okay, so definitely US might have to soften its stance against China, Pakistan, Russia and perhaps even Iran. Because in the region right now, these four countries are somehow effective. They are like controlling the things there. Okay, पाकिस्तान की हेल्प से चाइना, रशिया जरूर वहां पे इफेक्टिव हैं. ईरान, द बॉर्डरिंग स्टेट ऑफ अफगानिस्तान, डेफिनेटली उनका रोल भी ज्यादा बड़ा होगा. ओके, नाउ व्हाट डज दिस मीन फॉर इंडिया? So definitely, like there is a healthy conversation among great powers, US, China, Russia, on the global and the regional challenge. Okay, so New Delhi must ensure that it doesn't become a casualty on the Southwest Asian geopolitical chessboard. How India can become a casualty? See, these world powers are taking decision. We cannot afford that India should be left out. Okay, India should be left out and you will have no stake. आपका कोई स्टेक यहाँ पे ना बचे. यू हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड नियर अबाउट $3 बिलियन. $3 बिलियन का आपका इन्वेस्टमेंट है अफगानिस्तान में. ठीक है ना?
सो थिंक अबाउट अ सिचुएशन, हाउ कैन यू अफोर्ड टू बी लेफ्ट आउट? आप पूरे तरीके से लेफ्ट आउट कैसे अफोर्ड कर सकते हो? ठीक है, ये पॉइंट आपको समझना है। तो इंडिया कभी भी ये नहीं चाहेगा। नाउ डेफिनेटली एडवांटेज चाइना एक्सट्रीमिज्म, ओके, द पोस्ट अमेरिकन पावर वैक्यूम इन द रीजन विल प्राइमरीली एडवांटेजेस टू चाइना। चाइना विल डेफिनेटली इंक्रीज इट्स फुटप्रिंट, इट वांट्स टू प्रमोट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, मोर नंबर ऑफ कंट्रीज, अफगानिस्तान भी इसके साथ जुड़ जाएगा, देयर विल बी बेटर कनेक्टिविटी, ओके, दे आर ऑलरेडी लाइक सपोर्टिंग तालिबान, सो वो कहेंगे कि तालिबान विल नॉट डैमेज, विल नॉट लाइक create any trouble for this belt and road initiative, और smoothly वो interconnection और connectivity establish करते जाएंगे. Okay, so this is the point here. Now this might alter the geopolitical and geo-economic foundations in the region. Okay, the point here is that this might further encircle India, तो India का encirclement और बढ़ जाएगा. Okay, ये एक यहाँ पे problem है, ठीक है ना? So there is another instance. Now when the weight of China is increasing, जब चाइना का वेट वहां पे इंक्रीज होगा, डेफिनेटली बीजिंग इज लेस लाइकली टू बिकम अकोमोडेटिव टुवर्ड्स इंडिया, इंक्लूडिंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इशू. ओके, सो एलओसी पे जो इशू चल रहा है उस पे भी चाइना जो है वो लेस अकोमोडेटिव होगा, क्योंकि रीजन नहीं होगा उनके पास इंडिया की बात सुनने के लिए, ठीक है ना? दे विल बी इन अ पोजीशन टू पुट मोर प्रेशर ऑन इंडिया, दे विल बी इन अ पोजीशन टू कंटेन इंडिया. ओके, सो ये हमें समझना है यहाँ पे, ठीक है ना? सो अनलेस न्यू दिल्ली फाइंड्स अ वे ऑफ एंश्योरिंग reapproachment with China, it must expect Beijing to challenge India on occasions and prepared for it. Now आने वाले टाइम पे और ज़्यादा चैलेंज ऐसे होने वाले हैं चाइना की तरफ से, ओके, एंड वी हैव टू प्रिपेयर फॉर इट, उसके लिए हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा. एंड सर्टेनली देयर विल बी इंक्रीज इन टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म, ये ज़रूर बढ़ सकता है. कैसे बढ़ेगा वो देखना होगा. सो डेफिनेटली तालिबान माइट नॉट प्रोपोगेट टेररिज्म डायरेक्टली, तालिबान डायरेक्टली शायद जो है टेररिज्म ना प्रमोट करे, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस माइट एम्बोल्डन द अदर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जैश ए मोहम्मद, ओके, इन लोगों को एम्बोल्डनमेंट मिलेगी कि तालिबान अगर एरिया कैप्चर कर सकता है तो कल को ये लोग भी कश्मीर कैप्चर कर सकते हैं. दे माइट हैव दिस थिंकिंग, okay, they might have this thinking. So US presence in Afghanistan, international pressure on Taliban and FATF. Now these worries like Pakistan, okay, और टेरर इकोसिस्टम के ऊपर थोड़ा सा इफेक्ट तो पड़ा था. Now you need to understand like Taliban, it has released terrorists from the Afghan jails. बहुत सारे अफगान जो टेररिस्ट थे अफगान जेल्स में थे उनको रिलीज किया इन्होंने, ठीक है ना? सो ये आपको समझना है, ठीक है? सो वाइल नेबरिंग कंट्रीज आर नॉट वरीड अबाउट टेररिज्म एमिनेटिंग फ्रॉम अफगानिस्तान, द रियलिटी इज दैट they are busy making their own private deals with Taliban. Okay, so neighboring countries अपने अपने private deal बना रहे हैं यहाँ पे. The problem is that यहाँ पे वो जो emboldenment मैंने आपको एंगल बताया, that's the major trouble here. Okay, that's the major trouble here. Now international community may not have may have no choice but to recognize Taliban regime. ऐसा हो सकता है. US China they have already shown some inclination towards that. Okay, यूएस ने चाइना ने रशिया ने वैसा इंक्लिनेशन दिया है दैट दे माइट रिकॉग्नाइज तालिबान. ओके, एंड डेफिनेटली इफ दे आर रिकॉग्नाइज्ड इट विल गिव मोर बार्गेनिंग पावर टू तालिबान. टेररिज्म के ऊपर तालिबान तालिबान के पास और ज़्यादा बार्गेनिंग पावर आ जाएगी. दैट्स द पॉइंट हेयर. ओके, दैट्स द पॉइंट हेयर. नाउ डेफिनेटली इट इज़ अनलाइकली दैट तालिबान विल प्रोएक्टिवली एक्सपोर्ट टेरर टू अदर कंट्रीज. ओके, कि पाकिस्तान के कहने पे तालिबान टेररिज्म इंडिया में करने लग जाए, ऐसा डायरेक्टली नहीं होगा. बट द पॉइंट इज अबाउट इंस्पिरेशन दैट दीज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन दे विल हैव फ्रॉम तालिबान्स विक्ट्री. तालिबान की विक्ट्री से इनको जो इंस्पिरेशन मिलेगा दैट हाउ तालिबान हैव डिफीटेड द वर्ल्ड्स बिगेस्ट आर्मी, वर्ल्ड्स बिगेस्ट एयरफोर्स यूनाइटेड स्टेट्स. अगर उनको यहाँ से हराया जा सकता है तो बाकी जगहों पे भी ये एम्बोल्डन होंगे. ओके, another important point, many anti-Pakistan terror organization would also be emboldened. So if Pakistan they are thinking that उनको कोई impact नहीं होगा, वो लोग भी emboldened होंगे, anti-Pakistan terrorist organizations भी. Okay, so that's the point here. Now impact on regional interest की अगर हम बात करें, so return of Taliban to Kabul has effectively led India's mission Central Asia to rest. Okay, so India was exploring Central Asia connectivity and definitely this might not be possible now. Okay, तो तालिबान के आने से वो चीज़ शायद इम्पैक्ट हो जाएगी. एंड डेफिनेटली इंडियाज डिप्लोमेटिक एंड सिविलियन प्रेजेंस इन द अफगानिस्तान इट डिपेंड्स अपॉन द तालिबान. इफ तालिबान वांट्स कि इंडिया के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन होगा
तो हम रखेंगे, ओके। एंड टू सम एक्सटेंट इट अगेन डिपेंड्स अपॉन पाकिस्तान ऑल्सो, पाकिस्तान क्या काफी अच्छा खासा इन्फ्लुएंस वहां पे रहने वाला है, ओके। सो as suggested, like we should have had some relations with Taliban, कुछ ना कुछ रिलेशन हमारा तालिबान के साथ होना चाहिए था, और डेफिनेटली ऐसा नहीं है, सो इट्स अ like strategic vacuum for us, we have less options available to us, okay. So like there is another thing which is to be figured out, like this anti US sentiment, anti US alliance which is like working right now, तो इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे कम है, ठीक है ना। वी कैन नॉट गो विद एंटी यूएस स्टांस, हम पूरा एंटी यूएस स्टांस नहीं लेके जा सकते, एंड दैट्स व्हाई अगेन ऑप्शन फॉर लेस, ऑप्शन फॉर इंडिया इज रिलेटिवली लेस, ओके। ऑप्शन फॉर इंडिया इज रिलेटिवली लेस, सो दैट्स द अनदर पॉइंट हियर, ये भी अपने आप में एक पॉइंट है, ओके। सो लाइक गिवन द लिटिल फिजिकल एक्सेस, इंडिया हैज its northwestern landmass, like its focus, okay, is bound to shift more to Indo-Pacific now. So India might also shift its focus to Indo-Pacific now. Another important thing will be that we might have this thing in our mind, and we might improve our relationship with our neighbors. So Modi 1.1 के टाइम पे, 1.0 के टाइम पे हमने अपने नेबर्स को काफ़ी जो है एरोगेंटली ट्रीट किया था. So this might show that हमारा जो वो चीज़ है वो हट जाए, and we might start treating them with more generosity, okay. Other thing is that we might look up to issues related in Myanmar, because we didn't criticize the जनता government in Myanmar, okay. Myanmar के generals को इंडिया ने criticize नहीं किया था. So this is one silver lining, that we might have some accommodative stance for Taliban also. So Taliban के साथ हम शायद थोड़ा accommodative हो जाएं, ठीक है ना. इंडिया पाकिस्तान टाइज की अगर हम बात करें, so definitely like India wants stability in the region, we want peace, and this peace might be a cold peace, okay. There are chances that this peace might be a cold peace with Pakistan. सारे issues आपके खत्म हो जाएं, ऐसा नहीं होगा. So you might be comfortable with the cold peace, okay. ताकि terrorist act इतने ज़्यादा ना हो, but आप इस peace को maintain रखें. So this is what we might look up to, okay. And lot will depend upon how we are going to deal with Kashmir issues, and how we are going to deal with the politics in the Kashmir, okay. तो कश्मीर की पॉलिटिक्स कैसे होती है, इलेक्शंस आप कितनी जल्दी करवाते हो, लॉट ऑफ थिंग्स कैन बी, लॉट ऑफ थिंग्स आर पेंडिंग विच वी हैव टू लुक अप टू. आप वहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर की स्टेटहुड कैसे इंस्टॉल करते हो, देर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो अभी बाकी हैं यहाँ पे, ओके. वी हैव टू स्टिल वेट एंड वॉच क्या वहाँ पे चल रहा है. सो लेट मी लुक इन टू योर डाउट. सो प्रांजल, you are saying, sir, should India and US approach other countries in region like Uzbekistan and Tajikistan to come up with some innovative plan? Definitely it can be worked out. आप definitely इसकी बात कर सकते हो, ठीक है ना. See, you have to look up to the points here. So US की अगर हम बात करें, now you are saying that उज्बेक्स के साथ बात करो, okay, या फिर आप ताजिक्स के साथ बात करो. Now when you talk to them, they basically Russian influence is more, okay. On these particular countries Russian influence ज़्यादा है यहाँ पे. So instead of going with US, Russia can help us now, okay. Russia हमें ज़्यादा अच्छे से help कर सकता है. Instead of going with US, taking help from US, Russia is in a better state to help us, okay. That's the point here. तो अगर आप ये suggestion लिख भी रहे हो कि उज्बेक्स और ताजिकिस्तान, we can take help from them, Russians are the better choice, better option, okay. So feel free. You are saying that our external minister yesterday said that we doing development in Afghanistan known for our own interest, but because we have historical relation with Afghanistan. So definitely, yes, definitely statements are made, and historical relations हमारे रहे हैं, okay. कहीं ना कहीं history अफगानिस्तान की भी हमारे साथ जुड़ी रही है. That's the point here, okay. Historical trade वहाँ पे होता रहा है, okay. ये point आपको समझना पड़ेगा. Other point which is important here, okay. See, this statement, it shows that we might accommodate Taliban. हम शायद थोड़ा accommodate हो जाएं तालिबान के साथ. Definitely it will be done after negotiation and all. जब discussion होगा तालिबान के साथ हमारे representatives का, then only you will come to know कि क्या बात हो रही है, okay. So this is the point. Till then we have to wait and watch क्या आगे चलता है. So we'll move to the next part now. आगे चलते हैं, देखते हैं क्या खास है हमारे लिए. We have already covered this, okay. So rumbling hills of Himachal Pradesh, you can read it on your own how things are done there.
सो एक पर्टिकुलर केस स्टडी है कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ जो यहाँ डिस्कस की है. सो हेयर विल मूव टू दिस पार्ट नाउ. अब हम सीधा इस पे चलेंगे. अरेस्ट इज नॉट ऑलवेज अ मस्ट सेज द सुप्रीम कोर्ट. दिस इज व्हाट सुप्रीम कोर्ट इज सेइंग. ओके, सो वी आर गोइंग टू कवर दिस इन डिटेल. इसको डिटेल में करते हैं, ठीक है ना. तो सुप्रीम कोर्ट इज सेइंग दैट लॉ डजंट मीन दैट गवर्नमेंट कैन यूज पावर इनडिस्क्रिमिनेटली. ओके, like to crush the personal liberty. So when you are going to arrest someone, definitely personal liberty which will be the casualty. Personal liberty सबसे पहले खत्म हो जाएगी. Okay, so that's the point here, and this is the statement made by Justice Sanjay Kishan Kaul. Okay, so we have to read them out. Now what they are saying that personal liberty is an important aspect of our constitutional mandate. Okay, now, occasion to arrest an accused during investigation arises when custodial investigation becomes necessary, and it is for heinous crimes. आप इसको देख सकते हो. Okay, first thing is that the investigator or investigation officer, if he is convinced that the person, okay, the accused is not going to run away, अगर वो कहीं पे भागेगा नहीं, ठीक है ना, so in that scenario definitely अवॉइडेंस ऑफ अरेस्ट कैन बी मेड. अरेस्ट को अवॉइड किया जा सकता है, ठीक है, ये पॉइंट इन्होंने बोला है. सो मेयर द प्रोविजन ऑफ अरेस्ट इज प्रेजेंट इन द लॉ. आप उसको रैंडमली जाके यूज कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए. ओके, इन्वेस्टिगेटर हैव टू यूज देयर ओन विजडम. उनको अपना विजडम यूज करना चाहिए, एंड इफ रिक्वायर्ड देन ओनली द अरेस्ट शुड बी कैरिड आउट. इन दैट केस ओनली अरेस्ट जो है वो हमें करनी चाहिए, ठीक है ना. सो कोर्ट इज सेइंग द डिस्टिंक्शन मस्ट बी मेड between the existence of power to arrest and the justification of the exercise. There must be some justification also why we are arresting them. हम किस लिए उनको अरेस्ट कर रहे हैं, कुछ जस्टिफिकेशन तो होना चाहिए ना. जस्ट बिकॉज द प्रोविजन इज देयर इन द लॉ, इट डजंट मीन दैट यू आर गोइंग टू एक्सरसाइज इट. ओके, सो इफ अरेस्ट इज मेड रूटीन, it can cause incalculable harm to the reputation and self esteem of a person. Okay, और इंडिया के अंदर तो बड़ी बात बनी जाती है, पुलिस आ गई जी घर पे, ठीक है ना. डायरेक्टली रेपुटेशन एंड सेल्फ एस्टीम ऑफ अ पर्सन इज इंपैक्टेड बाय इट. सो कोर्ट इज सेइंग दैट इफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैज नो रीजन टू बिलीव दैट द accused will abscond or disobey the summon through planned, like he is going to cooperate throughout, then definitely कोई कंपल्शन नहीं होनी चाहिए ऑफिसर के पास कि उनको अरेस्ट करें. ओके, सो इन दैट सिनेरियो कंपल्शन टू अरेस्ट अ पर्सन शुड बी अवॉइडेड. दिस इज व्हाट योर कोर्ट इज सेइंग, ठीक है ना, ये आपकी कोर्ट कह रही है. ओके, अदर देन दैट ऑन दिस पेज देयर इज नथिंग मच, कुछ खास नहीं है. सो विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट नाउ. नाउ इट इज लाइक highlighting few things. Elopement most prosecuted under the child marriage law. Okay, now this is what they are saying. Okay, elopement के केसेस ज़्यादा यहाँ पे आते हैं, ठीक है ना. फोर्स्ड मैरिज के केसेस कम आते हैं. ओके, सो चाइल्ड मैरिज लॉ वी हैव टू कर्ब द फोर्स्ड मैरिजेस. चाइल्ड मैरिजेस को कम करना है, उसके लिए चाइल्ड मैरिज लॉ है. बट द थिंग इज दैट यू आर यूजिंग द प्रोविजंस ऑफ दीज लॉज आर यूज्ड मेनली इन द केसेस ऑफ इलोपमेंट. ओके, इलोपमेंट मीन्स झांसा देके शादी करना, ठीक है ना. ये लाइक यू आर प्रोमिसिंग समवन एंड देन यू आर नॉट मैरिंग दैट गर्ल. ओके, सो वो केसेस ज्यादा यहाँ पे एक तरीके से प्रोसिक्यूट होते हैं. तो दिस इज व्हाट दे आर टेलिंग अबाउट. ओके, सो ये चीज ये बता रहे हैं. सो it shows that the child marriage law which was framed for the purpose of stopping the child marriage. Okay, इस लॉ का पर्पस क्या था कि चाइल्ड मैरिज को स्टॉप करें, बट मेनली इसका यूज क्या हो रहा है, इलोपमेंट के केसेस के अंदर. ओके, डायरेक्टली जो है चार्जेस इलोपमेंट के, जो इलोपमेंट के केसेस में चाइल्ड मैरिज के चार्जेस फ्रेम हो जाते हैं. सो दिस इज द प्रॉब्लम. ओके, जो वहां पे लॉ की एफिकेसी कहीं ना कहीं अंडरमाइन हो रही है. अदर देन दैट देर इज नथिंग मच, कुछ खास नहीं है यहाँ पे. ओके, सो कोटा बेनिफिट्स कांट बी अवेल्ड साइमल्टेनियसली इन टू states. This is what the news says. Okay, see, this was related to a person like when Jharkhand and Bihar was one state. तो उस टाइम पे now he is claiming a quota. तो अब वो कोटा क्लेम कर रहे हैं झारखंड के अंदर ही. नाउ द कोर्ट हैज सेड दैट ओके दिस कैन नॉट बी डन. सो दिस ही कैन डेफिनेटली अप्लाई फॉर एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकता है अंडर द जनरल कैटेगरी. कोटा दो जगह पे आपको नहीं मिलेगा. ओके, सो दिस इज व्हाट सुप्रीम कोर्ट इज मेंशनिंग हियर. सो अदर देन दैट देयर इज नथिंग मच, कुछ खास नहीं है. ओके, विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट नाउ. आगे चलते हैं, सीधा क्या है. ऑन दिस पेज ऑल्सो देयर इज नथिंग मच, कुछ खास नहीं है, ठीक है ना. सो ओडिशा हैज इशूड अ स्मार्ट हेल्थ कार्ड. नो, स्टेट गवर्नमेंट्स आर ऑल्सो टेकिंग सम इनिशिएटिव्स देयर, कुछ इनिशिएटिव ले रहे हैं.
Okay, so we'll directly move to the international page and see what exactly is there. And this particular interview is important. Okay, both Trump and Biden administration responsible for Afghan situation. Basically, this interview is highlighting fault, or you can say fault line in US policy. Okay, faults of United States in Afghanistan. So they are highlighting few things, and quite interesting things are there. Okay, and we'll look into this. He's saying that okay, this recent decision to come for the complete withdrawal, and they moved out 16,000 contractors immediately, सब कुछ एकदम से withdraw कर लिया. Now she's saying that definitely the solution to this problem can be explored only with the concerted international commitment. अगर international commitment होगी humanitarian crisis के against, then only we will be able to deal with this problem. Okay, otherwise it might become difficult. Now she's highlighting few important points. Okay, now we are going to look into them one by one. First thing, she is saying that Trump and Biden administration both have the responsibility. Both were responsible for it. First thing was that there was a weak agreement that was signed with Taliban, that was negotiated with Taliban. तो आपको एक मालूम होना चाहिए दोहा peace process. Okay. Now Doha peace process, if you look into the provisions or agreements that were negotiated, they were very weak and they completely undermined the legitimacy of the Afghan government. Afghan government की legitimacy पूरे तरीके से खत्म कर दी थी इन्होंने. There is an interesting finding here. Now US forced the Ghani government to release 5,000 Taliban prisoners. 5,000 Taliban prisoners को रिलीज किया गया यहाँ पे. ओके, विदाउट इवन तालिबान कमिटिंग एनीथिंग. तालिबान ने कुछ नहीं कमिट किया था उस टाइम पे, but US allowed 5,000 Taliban prisoners to be released. Now another important part here, this contributed to delegitimizing your President Ghani. President Ghani was looking to be weak, उनको weak नजर आ रहा था वो, ठीक है ना. And this further fueled the political divisions. जो political divisions थे कि ये leadership क्या कर रही है, तो within the Afghan political elites there was a political division. लोग बट गए आपस में. This was again a problem. Okay, so it was a hasty withdrawal. We know about this thing. How can you withdraw 16,000 contractors? US के एकदम सारे contractors वहां से हटा लिए गए थे, ठीक है ना. Another important part is that throughout the whole negotiation, US administration didn't thought about and didn't pointed out the safe haven given by Pakistan. जो तालिबान सेफ हेवन वहां से इंजॉय करता था, एंड दिस डेफिनेटली कंट्रीब्यूटेड इन इंक्रीजिंग द कैपेसिटी एंड एबिलिटी ऑफ तालिबान. यहां से तालिबान ने स्ट्रेंथ गेन किया है, ठीक है ना. तभी तो इमीडिएटली वो मिलिट्री कैप्चर किया उन्होंने सब जगह का, बिकॉज पाकिस्तान वाज सपोर्टिंग देम and no one talked about it. No one talked about it. Okay, now another question comes to establishing a diplomatic relationship with Taliban. So she is saying that countries might recognize Taliban, but diplomatic recognition of Taliban should be done and should be based on human rights, respect for human rights, women's rights in particular, and counter terrorism. So countries can definitely put pressure on Taliban that Taliban should address all these concerns, and then only there will be diplomatic recognition. उस केस में हम जो है diplomatic recognition कर सकते हैं. Okay, so the only thing the US got out of Doha agreement was the fact that Taliban did not shoot the US forces as they were departing the country. So यही उन्होंने सिर्फ निकाला है दोहा एग्रीमेंट से, बाकी कुछ भी इसके अंदर नहीं था दोहा एग्रीमेंट में, and which completely delegitimized the government of Taliban, the government of Afghanistan. Government of Afghanistan बिल्कुल वहाँ पे delegitimize हो गई थी. So this is the point that they are making. Okay, this is the point that she is making. So other than that, there is nothing much. Okay, so here they are saying NATO is urging Taliban to allow evacuation, and there is a report of targeted killing in Afghanistan right now. This is what Afghans are fear of. Okay, यही इनको डर लग रहा है. Other than that, we look into this. Now this aspect, China formally passes the third child policy into law. Okay, now they are saying that couples can have 3 children. Why it is so? Because demography of China, okay, it has changed. Why it has changed? China is becoming older. China बूढ़ा होता जा रहा है, ठीक है ना. Average age is increasing and there is a shortage of labor force. वहाँ पे labor force की shortage है. Okay, so in future when youngsters are not available to work as labor, okay, तो यहाँ पे बहुत problem आने वाली है चाइना को. This is the thing that they are highlighting.
another important thing is that now they have made this law. My question is that, is it going to work? Is it going to work? Okay. See, you need to understand this thing. This is related to the reproductive rights of women. Okay. This is related to the reproductive rights of women. ये आपको समझना पड़ेगा. Now women, they are working over there. They have a career. काम कर रही हैं वो वहाँ पे, लेबर फोर्स का पार्ट हैं, दे हैव अ करियर, एंड करियर ओरिएंटेड वुमेन, डेफिनेटली फॉर देम इट इज डिफिकल्ट टू हैव 2 children or 3 children. Okay, so if even if they are trying, even if they are saying कि यहाँ पे 3 children are allowed, but the behavioral change that will be required, उसमें बहुत टाइम लग जाएगा. It is not going to be easy. Okay, it is related to the behavioral things, it is related to the reproductive choices, so it is going to take time and it might not be possible, because definitely if women have career things in their mind, so वो 3 बच्चे नहीं करेंगे, ठीक है ना. So it is very difficult, it is very difficult and impractical. So this is the problem that is emerging now. ये सब चीज आ रही है यहाँ पे. Okay, so we have to just figure it out, कैसे चाइना का डेमोग्राफी चेंज होता है कि नहीं होता है. These are few things that we have to look up to. Okay, so let's look into the other aspect. Okay, a light point you are pointing out that reports are saying that the Hamid brother, which was captured by Pakistan in 2010 and now he is going to be president of Afghanistan, can we say that there can be some anti-Pak measures? No, see, you need to understand, you are saying that there can be some anti-Pak measure in Taliban. Okay, so one thing is for sure, see, Taliban, if you say, okay, now Taliban, one is Afghan Taliban, ठीक है ना, one is तहरीक तालिबान पाकिस्तान. Okay, तहरीक ए तालिबान Pakistan. Now तहरीक तालिबान Pakistan, this was the organization which, they were also Pashtuns, and they were fighting in the region of Pakistan. They were fighting against Pakistan. Okay, they were fighting against Pakistan. So definitely Tehreek-e-Taliban Pakistan, which want liberation from Pakistan, they might also get emboldened. Okay, वो थोड़े emboldened होंगे, and definitely at the end of the day they are also Pashtun. They speak the same language which Taliban fighters are speaking. Same sentiments and same Pashtun जबान बोलते हैं. Culturally they are related. Okay, so they might get emboldened and Taliban might not criticize them directly. जो अफगान तालिबान है वो शायद इनको directly criticize भी ना कर पाएं. So this is the important thing that Pakistan has to look into. तो नुकसान पाकिस्तान का भी हो सकता है. ओके, ये पॉइंट आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना, ये पॉइंट आपको समझना पड़ेगा. ओके, सो अमित वर्मा सर, मुझे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शन पढ़ना है, प्लीज ऑनलाइन कोर्स के बारे में बता दीजिए. अमित, लाइक दिस इज नॉट द राइट टाइम, लाइक आफ्टर द सेशन आई विल डिस्कस इट विद यू. ओके, so you can definitely like I have my WhatsApp number. Okay, so I'll share my WhatsApp number. You can definitely contact me 855-7045-244. Okay, so you can WhatsApp me and I'll definitely respond to your query related to public administration. Okay, so right now the batch is going on. We are already like going through our batch. तो batch तो अभी तक चल रहा है. So we'll move to this part now. Now MPC's Verma flags risk of policy stance. Okay, see, you need to understand, Mr. Verma, he was the only dissenter in recent policy decision taken by the MPC. Monetary Policy Committee ने जो अभी recent decision लिया था that to hold on the repo rate, कि repo rate जो चल रहा है उसको continue रखें, उसके अंदर he was the only one who was dissenting. ये एकमात्र dissenter थे. Okay, so his point of view वो हमारे लिए important है. Let's look into what exactly we have for Monetary Policy Committee. So Monetary Policy Committee, it was constituted by the government, and the major task that has been given to this policy committee is to take policy decision related to repo rate, reverse repo rate, okay, cash reserve ratio and all things. ठीक है ना. Now if you talk about composition of MPC, 6 members are there. ठीक है, no government official will be nominated to MPC. Okay, this is the provision. Now like the government will nominate 3 members. This is what they are saying. Okay, 3 members government के होंगे. अब आगे ये no official will be nominated to MPC, ये क्यों लिखा है
there is no clarity. 3 मेंबर गवर्नमेंट के आते हैं एंड आरबीआई विल हैव सम रिप्रेजेंटेशन हियर, ठीक है ना. मींस टोटल इन 6 जो हैं 3 मेंबर विल बी फ्रॉम आरबीआई, वहां पे गवर्नमेंट कोई नॉमिनेट नहीं करेगा, एंड 3 मेंबर्स विल बी फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, ठीक है. ये पॉइंट आपको समझना होगा. वी नो दैट एमपीसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बट द पॉइंट हियर इज दैट यू शुड नो, देयर आर न्यू स्टूडेंट्स, ओके, जिनको ये चीज मालूम होनी चाहिए. नाउ डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई, लाइक ही इज आल्सो पार्ट ऑफ इट. द गवर्नर ऑफ आरबीआई, ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, ओके, एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल बैंक, ही इज आल्सो अ मेंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर कमेटी, ठीक है. नाउ दे टेक डिसीजन. But here they are pointing about few things. Okay, so here it's about Jayant Verma, who expressed serious reservation about RBI's protracted accommodative policy stance. Now, what is the protracted accommodative stance? हमारे यहाँ पे जो rate of interest है, जो repo rate है, वो बहुत कम किया हुआ है, ठीक है ना. So they are more accommodative, means the flow of money has increased in the economy. Flow of money has increased in the economy, okay, and what is the consequence of that? Inflation. Inflation is the consequence. Now MPC have been given the target कि उनको जो है 4 + -2 ये आपका टारगेट है, ओके. नाउ व्हेन फ्लो ऑफ मनी इज इंक्रीजिंग, डेफिनेटली आपका जो कंट्रोल है इन्फ्लेशन के ऊपर वो कहीं ना कहीं इंपैक्ट होगा, ओके. सो दैट्स व्हाई ही इज सेइंग दैट देयर इज अनसर्टेनिटी ओवर कोविड and it might be counterproductive, okay, ये counterproductive हो सकता है. And he was the only dissenter in the recent decision taken by the monetary policy committee. He is saying that the ability of monetary policy committee to mitigate human tragedy, ठीक है ना, is very limited. देखो जो human tragedy है कोरोना की, monetary policy committee से वो ठीक नहीं होने वाली. So monetary policy committee that can definitely deal with economic crisis but not the human tragedy. And I am telling you this thing, he is saying that for next 3 to 5 years the COVID is going to stay. COVID, the impact of COVID, you cannot rule out that for next 5 years this is going to stay. Now for next 5 years can you have this accommodative policy stance? क्या अगले 5 साल तक आप ये accommodative stance रख सकते हो क्या? ये एक चॉइस है जो हमें मिल लेनी है. एंड इट विल बी डिफिकल्ट दैट फॉर नेक्स्ट 5 years आप यही चॉइस लेके चल रहे हो, आप इतने इंटरेस्ट रेट अपना कम लेके चल रहे हो, ओके. सो यही इन्होंने बोला है दैट इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट, you cannot maintain it for 5 years, okay. So he said that monetary accommodation appears to be stimulating asset price inflation. That you were saying that कि ये आपकी इकोनॉमी का डिस्ट्रेस को मिटिगेट करेगा, आपकी इकोनॉमी को रिवाइव करेगा. नो, where it is contributing to increase the asset prices. आपकी एसेट के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, आपकी इकोनॉमी में कुछ बड़ा चेंज नहीं आ रहा है. This is what they are saying. He is saying that, emphasizing that inflationary pressures were beginning to show signs of greater persistence than anticipated earlier. So the inflationary pressures that we have वो बहुत strong होने वाला है, ठीक है ना. So it will be difficult for MPC also कि कैसे वो 4 + -2 means maximum limit is 6%, ये आप अचीव करें, इससे नीचे नीचे रखना है. It will be difficult क्योंकि ये सिचुएशन बना हुआ है. Your economy, the flow has increased, मनी फ्लो काफी इंक्रीज हो गया है. अब कब तक ऐसा हम अकोमोडेट कर सकते हैं? दिस इज व्हाट वी हैव टू look up to, okay. So we'll cover this next news. Now RBI IRDAI node must for FDI in bank led insurance, okay. So we'll look into this, what exactly is there. Now there are some changes made under this. So foreign exchange management rules are out now, okay. These rules, they are pointing out few things, that FDI investment, any application for FDI investment in your insurance company, it will be scrutinized by RBI and IRDAI, okay, to ensure that the 74% limit of overseas investment is not breached. ये जो 74% लिमिट है इंश्योरेंस के अंदर कि आप इंश्योरेंस में 74% FDI आ सकता है, वो ब्रीच ना हो जाए, okay. So you should know about this thing. The Insurance Act 1938 was last amended in 2015, raising the limit to 49%, okay. और उससे काफी कैपिटल इनफ्लो यहाँ पे आया था. And recently also in March, government passed the bill to raise the further FDI limit, and it was increased to 49% to 74%, okay. So 74% के राउंड हमारे यहाँ पे अब FDI आ सकता है. But the point here is that the application for FDI in private banks having joint venture or subsidiary in insurance may be addressed to Reserve Bank, ठीक है ना, for consideration.
in consultation with इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया. ओके, सो IRDA और ये RBI दोनों मिलकर ये डिसाइड करेंगे कि अलाउ करना है कि नहीं करना. एंड 74% जो मार्क है वो कभी ब्रीच नहीं होना चाहिए. ओके, सो दैट्स द लिमिट दैट वी हैव. नाउ अमृता, गुड मॉर्निंग. ओके, सो we'll look into this. Arvind Yadav, good morning. Okay, so Pranjal, you are saying that sir, what can be the ways by which opposition's position can be improved through judicial intervention so that the dominance of the majority can also be regulated? Okay, see, you need to understand judicial intervention is not required at all. Okay, complete no to judicial intervention. Why it is so? Because you have separation of power. You have separation of power. So judiciary has its limit. It cannot breach. It cannot move out. ये लिमिट में काम करना है जुडिशरी को. लेजिस्लेचर के मामले में नहीं आना है डायरेक्टली. ठीक है ना? सो व्हेन यू टॉक अबाउट लेजिस्लेचर, ओके, जुडिशरी शुड कंट्रोल इटसेल्फ. नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रेंथनिंग द ऑपोजिशन. आई एम सेइंग दिस व्हेन नेहरू जी वाज देयर. ओके, नेहरू जी थे वहां पे. सो अगर ऑपोजिशन में दो लोग भी होते थे ना, ही यूज्ड टू गिव रिस्पेक्ट टू देम. ओके, ही यूज्ड टू गिव रिस्पेक्ट टू देम. So Mukherjee, Shama Prasad Mukherjee, Atal Bihari Vajpayee, okay, so they were in opposition during the Nehru time. ठीक है ना? So he used to listen to them, he used to respect to them. So efficacy of opposition, it somehow depends upon the ruling government also, party in power also. Okay, so how they are responding, how responsible they are, ये उन पे डिपेंड करता है कुछ चीजें. Other thing is that you have to wait for people to realize. Okay, people to realize कि opposition का भी एक रोल है. ठीक है ना? opposition का भी एक रोल है. Okay, लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि कैसे उनको opposition को strengthen करना है. Other thing is that if you talk about opposition in this country, opposition was primarily based on the regional parties. Okay, आपके यहाँ पे regional parties जो हैं वो opposition को strength देता था. ठीक है ना? वो बेसिकली ओपोजिशन को स्ट्रेंथ देता था. नाउ इफ दीज रीजनल पार्टीज दे आर गेटिंग वीक, ये वीक हो रहे हैं, उससे भी इंपैक्ट आ रहा है. सो अनदर सिनेरियो कैन बी दीज रीजनल पार्टीज दे शुड रियलाइज दिस थिंग. ओके, कि उनकी वीकनेस की वजह से ऐसा हो रहा है एंड दे शुड बी मोर प्रोएक्टिव. एंड डेफिनेटली टुडे सोनिया गांधी इज सेइंग दैट वी हैव टू यूनाइट टू फाइट बीजेपी. सो उस चीज के ऊपर डेफिनेटली इनको सोचना चाहिए. ठीक है ना? सो दिस इज द ओनली वे आउट. अदरवाइज ये सब चलता रहेगा एज इट इज. ओके, और यू नेवर नो, जो है सेम गवर्नमेंट रहने वाली है. ओके, सो पॉजिटिव नेगेटिव्स बोथ आर देयर इफ यू हैव गवर्नमेंट विद सच मेजोरिटी, सच वास्ट मेजोरिटी. वन ऑफ द पॉजिटिव इज दैट ओके, दे कैन टेक मोर रिस्की डिसीजंस. काफ़ी रिस्की डिसीजन ले सकते हैं, क्विक डिसीजन ले सकते हैं, रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. ओके, सो हर चीज़ के पॉजिटिव नेगेटिव्स होते हैं. सो यू शुड नो अबाउट इट. सो दैट्स इट फॉर द डे. थैंक यू वेरी मच.